So next topic is polymorphism in coelentrata. So first of all, meaning of polymorphism. I have told you earlier also that polymorphism, poly means many, morphism means morphologies. When more than one type of individual which is different morphologically and functionally is present in a species, the phenomena is known as polymorphism. And the main motive of the polymorphism is the division of labor so that each individual it do its specific work and there is division of labor among the individuals. Polymorphism, very common example you have seen in ants and termites. ठीक है, एंड्स और टर्माइट्स और हनी बीज में आपने देखा होगा जहाँ पे डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंट वर्क करते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी भी डिफरेंट होती है. लाइक हनी बीज में वर्कर हनी बी है, ड्रोन है, क्वीन है, 3 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल आर देयर. नाउ मेन डिफरेंस इज कि वहाँ पॉलीमॉर्फिज्म में जो इंडिविजुअल होते हैं वो सेपरेट सेपरेट रहते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं, जबकि जो सीलन ट्रेट हैं यहाँ पे वो फिक्स्ड होते हैं और मोस्टली कुछ एक को छोड़ के दे आर अटैच टू ईच अदर इन अ colony. So this is known as the polymorphism, and individual of a colony are known as zooid. This is very important. Zooids are the individual of the colony. So two basic forms of the zooids are polyp and medusa. I have told you earlier also that polyp is nutritive zooid which feed the colony. It has mouth surrounded by the tentacles. Tentacles they capture the prey. देन द प्रेज गो इनटू द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी. ठीक है, जहाँ जो यहाँ पे डाइजेस्टिव कैविटी होती है दैट इज़ नोन एज द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी. तो टेंटिकल्स की हेल्प से माउथ के थ्रू प्रे जो है वो जाता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जहाँ पे डाइजेशन होता है और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पूरी कॉलोनी को. सो दीज आर नोन एज द पॉलिप्स. जबकि सेकंड जो होते हैं मेड्यूसा. मेड्यूसा जो होते हैं वो अम्ब्रेला लाइक होते हैं, बेल लाइक होते हैं, एंड मोस्टली दे आर फ्री स्विमिंग एंड देयर सोल फंक्शन इज रिप्रोडक्शन. सो दे आल्सो हैव marginal tentacles and mouth centrally located. They are sessile, sorry, they are motile and they exist homology between the पॉलिप्स. ठीक है, तो उनकी होमोलॉजी सेम होती है, सेम पेरियोसाक, सीनोसाक, सेम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी. नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म आई हैव टोल्ड यू बिफोर आल्सो दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर. ठीक है, इंडिविजुअल जो है अपना डिफरेंट डिफरेंट काम ले लेते हैं तो ताकि कोई एक इंडिविजुअल ओवरलोड ना हो जाए वर्क से. Pattern of polymorphism. So depending upon the types of the zooids, there are dimorphic colonies, trimorphic colonies and polymorphic colonies. To dimorphic, it is present, example is Obelia, tubularia, and they have two types of zooids, gastrozoids or hydranth. Gastrozoid or hydranth. So as the name indicate, gastro means digestion. So gastrozoids, they are connected with the feeding and nutrients of the colony. They are also known as hydranth. While gonozoids or blastocyle with asexual budding forming sexual medusae or gonophore. ठीक है, तो गोनोजॉइड बियर करते हैं मेड्यूसा और द गोनोफोर. सो दीज आर द डाइमॉर्फिक कॉलोनीज. ट्राइमॉर्फिक कॉलोनीज मीन 3 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल. ठीक है, बेसिक तो वही होंगे, गैस्ट्रोजॉइड जो फीड कर रहे हैं एंड द गोनोजॉइड जो मेड्यूसा को बियर कर रहे हैं. ठीक है, रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं. थर्ड टाइप होते हैं डेक्टाइलोजॉइड्स. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर नॉन फीडिंग बट दे आर डिफेंसिव. ठीक है, डिफेंसिंग मीन्स वो कॉलोनी की रक्षा करेंगे. ठीक है, बियरिंग बैटरीज ऑफ निमेटोसिस्ट. मैंने पहले भी बताया था स्पेशल सेल्स होती हैं विच आर नोज एज निमेटोसिस्ट और द नीडोब्लास्ट. इसीलिए हम निडेरिया भी बोलते हैं सीलेंट्रेटा को. तो ये क्या करती हैं, ये स्टिंगिंग सेल्स होती हैं, स्टिंग करती हैं प्रीडेटर्स को, उनको पैरालाइज करती हैं. तो जो डेक्टाइलोजॉइड थर्ड टाइप ऑफ जोइड्स आए. ठीक है, एक आ गया हमारे पास गैस्ट्रोजोइड. ठीक है, एंड गोनोजॉइड थर्ड टाइप डेक्टाइलोजॉइड जो कॉलोनी को डिफेंड करता है. तो ये आ गई ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी. पल्मोनेरिया इसका एग्जाम्पल है. Next are the polymorphic. Coelentrata having more than 3 types of individual are known as the polymorphic. ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके. तो इसमें जो जूआइड्स होते हैं गैस्ट्रोजोइड्स फीडिंग के लिए, स्पाइरल डेक्टाइलोजोइड्स
प्रोटेक्शन के लिए डाक्टाइलोजॉइड मैंने बताया था, ये डिफेंड करते हैं कॉलोनी को। लॉन्ग सेंसरी टेंटिकुलोजॉइड, जिनको पाल्पर्स और फीलर्स भी बोलते हैं, जो सेंसरी होते हैं, बाहर के इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं, वाटर की क्वालिटी क्या है, एसिडिटी क्या है, पीएच क्या है। स्केलेटोजॉइड्स एट द नेम इंडिकेट, स्केलेटन मीन्स इनमें हार्ड काइटिन के स्पाइनी प्रोजेक्शंस होते हैं, ये कांटेदार होते हैं, एक्सोस्केलेटन बियर करते हैं। एंड गोनोजॉइड्स और द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, तो ये आ गई पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी। तो पॉलीफॉर्मिक कॉलोनी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है दैट इज़ द साइफोनोफोरा, ठीक है। सो हियर यू कैन सी इन द डायग्राम दैट इज साइफोनोफोरा, ठीक है। ये डायग्राम आप ड्रॉ भी करेंगे असाइनमेंट। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल इन द साइफोनोफोरा। तो सबसे पहले आ जाते हैं गैस्ट्रोजोइड्स, ठीक है। तो दीज आर द गैस्ट्रोजोइड्स। हेयर माउथ इट इज़ विदाउट टेंटिकल, एक सिंगल टेंटिकल होता है विच ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस एंड एट द टिप इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टेंटिलम, ठीक है। वन या मोर देन वन टेंटिलम होते हैं, ग्रुप होता है यहाँ पे, एंड दे बियर द बैटरी ऑफ द निमेटोसिस्ट। तो ये गैस्ट्रोजोइड्स होते हैं, दे आर न्यूट्रिटिव इन फंक्शन, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे पास डेक्टाइलोजोइड्स। डेक्टाइलोजोइड्स होते हैं, दे आर लाइक पॉलिप्स बट दे लैक माउथ, ठीक है, उनमें माउथ नहीं होता। दे बियर ए लॉन्ग टेंटिकल, ठीक है, और टेंटिकल में टेंटिला नहीं होता। दे आर डिफेंसिव इन फंक्शन, ठीक है। गोनोजोइड्स होते हैं जो कि बियर करते हैं मेड्यूसा, तो दीज आर नोन एज द गोनोजोइड्स, ठीक है। तो ये तीन फॉर्म्स आ गई, गैस्ट्रोजोइड, डेक्टाइलोजोइड एंड गोनोजोइड। दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द पॉलिप, ठीक है। मैंने बताया था दो तरह के इंडिविजुअल होते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। तो पॉलिप की जो है तीन तरह के हमारे पास इंडिविजुअल आ गए, ठीक है। दीज आर द गैस्ट्रोजोइड, डेक्टाइलोजोइड एंड द गोनोजोइड्स। अब आगे है, so in the previous video you studied various modification of polyps. These were gasterozoids, dactylozoids and gonozoid. Now we will study the modification of the medusa form, okay. Medusa, you know, they bear gametes, they are sexual zooid and they are umbrella like organism. So various modifications of the medusa are, first are swimming wells. So here you can see the swimming wells. These are known as swimming wells. These are also known as the nectocalyces or nectophores. Nectocalyx is the singular and nectocalyces is the plural. So these are known as, this is young and this is mature. At maturity there is a space. So this is known as, it is also medusa like, it is umbrella like, and it has velum, radial canal, circular canal, but without mouth, okay. It lack mouth. The main function of it's swimming. It is muscular, and by its muscular movement it help to swim the colony. It help to locomotion in, it help in the locomotion of the colony, that is transportation from one place to another. So main function of the swimming wells, that's why these are known as swimming. They are muscular and they help in swimming. Next is bracket. This is bracket. This is very simplified medusa, which is also known as phyllozooids. Hydrophylla, phyllozooid or the bracket. It is very thick, gelatinous. It may be branched. It may be with simple or branch gastrovascular cavity, and these brackets, they are protective in function. Next is the gonophore. Gonophores, they are also medusa like, means they are also umbrella like, but they lack mouth and tentacles and the sense organs. They bear gametes. Female gonopores are medusa like and male gonopores are sac like. Their main function is to produce gametes. Next is the pneumatophore. These are the pneumatophores. This is also known as the float. फ्लोट क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज इट प्रोवाइड बायंसी, ठीक है। बायंसी, यू नो, लाइटनेस। जैसे एक बैलून वाटर में फ्लोट करेगा, वैसे ही ये जो होता है, इट प्रोवाइड बायंसी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गैस। इट हेल्प इन फ्लोटिंग द कॉलोनी सो दैट द कॉलोनी मे नॉट सिंक, ठीक है। नाउ इट इज़ आल्सो अम्ब्रेला लाइक, इट्स एक्सटर्नल सरफेस, ठीक है, और एक्स अम्ब्रेला इट इज़ नोन एज न्यूमेटोकोडोन, and its internal membrane it is known as the pneumatococcus. At the floor, the epidermis is modified into a gland and secrete a gas. These gas keep the colony afloating, ठीक है। ये गैस जो होती है कॉलोनी को फ्लोट करने में हेल्प करती है, and this air it mainly consists of the nitrogen and the oxygen. So this is the pneumatophore or the
It is also known as the float. ठीक है. So there are modification of medusa and polyp in the siphonophora. Polyp में हमने देखा गैस्ट्रोजॉइड, जिनका मेन फंक्शन क्या है, न्यूट्रिशन. डिक्टाइलोजॉइड, जिनका मेन फंक्शन क्या है, द डिफेंस ऑफ द कॉलोनी. गोनोजॉइड जो होते हैं, दे आर लाइक गैस्ट्रोजॉइड्स एंड दे प्रोड्यूस गोनोफोर. उसके बाद मॉडिफिकेशंस आ गई हमारे पास मेड्यूसा की, जिसमें आ गई स्विमिंग बेल्स जो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, मस्कुलर होती हैं. ठीक है. देन कम द ब्रैकेट्स दे आर जिलेटिनस एंड दे हेल्प इन द प्रोटेक्शन. देन गोनोफोर जो कि बियर करते हैं गैमीट्स, these are known as the gonophore. And finally the pneumatophore or the nectocalyx, plural is the nectocalicis. So this is all about the polymorphism in the coelentrata. Polymorphism means existence of one then more individual, and there is distribution of the labor, there is distribution of the various functions.